हेलो भाई लोग। आज है वर्ल्ड चैंपियनशिप डे का रेस्ट डे। आज गुकेश और डिंग आराम से लेटे होंगे अपने अपने बिस्तरों पे और उनके सेकंड्स बेचारे लगा रहे होंगे। अरे भाई यार, आज कितना मेहनत करना पड़ रहा है रे, पसीना छूट रहा है सिंगापुर के एसी होटल में बैठ के, 5 स्टार होटल में बैठ के। तो कहीं ना कहीं कोई ना, वो लोग अपना काम कर रहे हैं। आज की वीडियो का ये टाइटल है भाई, माई फर्स्ट वीडियो एवर। तो इसका पर्पस क्या है भाई? कई लोग मुझे कह रहे थे कि यार टिक्कू भाई, यहाँ पे तो बड़ा करते रहते हो भाई, वर्ल्ड चैंपियनशिप ब्रॉडकास्ट पे काहे नहीं बोलते भाई? वहां पे तो ऐसे शुश करके गुड बॉय की तरह बैठे रहते, हा हा हा, अब क्या हुआ, अब क्या हुआ है? यहाँ पे तो बड़ा नाटक चलता है भाई। सिंपल सा लॉजिक है भाई। भाई मैं करता हूँ घर से कमेंट्री, ठीक है? अभी मैं किसी के घर पे बैठा हूँ, ठीक है, अपने किसी जान पहचान के घर पे, ठीक है? घर से कमेंट्री करना ना और स्टूडियो में करना भाई अलग है। एक तो पहले स्टूडियो सेटअप, जहां पे आपको स्क्रीन पे नहीं दाएं बाएं देख के बात करनी पड़ती है भाई। पहले दिन तो ब्रॉडकास्ट के मैं लिटरली ऐसे ऐसे मेरी मुंडी चल रही थी भाई। बाद में मुझे किसी ने कहा भाई दाएं बाएं देखने की जरूरत नहीं है, सीधा ही देखो। मैंने कहा अच्छा ऐसे करते क्या कुछ वीडियो कमेंट्री, सीधा देखना पड़ता है? ओहो अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था। दूसरा आता है भाई, भाई मैंने ना सागर समय तान्या तीनों को भाई चैट में देखा है। तो मैं ना 2020 और 21 और 22, जब तुम लोग भी यही लेट लेट के रात को 2 बजे समय भाई यही मैं भी किया करता था भाई। तो होता क्या है, मैं वहां बैठा होता हूँ और मैं सारा देखता हूँ यार, वो जोक मार रहा है, वो जोक मार रहे हैं, जोक जोक जोक, मैं हंसे जा रहा हूँ भाई मैं भूल जाता हूँ वही बैठा हूँ भाई। कई बार तो 15 मिनट हो जाते हैं, फिर सडनली मैं एक स्पेक्टेटर मोड में होता हूँ, सडनली ऐसे आंख खुल, भाई 1 सेकेंड में भाई मैं तो पैनल पे ही बैठा हूँ, मैं घर के बिस्तर पे नहीं हूँ भाई। कई बार आधे घंटे बाद लगता है मुझे कि भाई मैं वहां पे बैठा हूँ भाई, मेरे को कुछ बोलना भी है। तो इट्स जस्ट दैट स्पेक्टेटर जोन जहां मैं आराम से घुस जाता भाई। तो द पर्पस ऑफ दिस वीडियो इज जस्ट टू शो कि भाई लाइफ में ना, लाइफ इज नॉट रेस भाई, लाइफ इज जस्ट इट्स लाइक अ लूप। तो आपको कॉन्स्टेंटली ना, एज लॉन्ग एज यू आर इम्प्रूविंग 1%, आई थिंक यू विल गेट बेटर। वर्ल्ड चैंपियनशिप डे 1 वॉज हॉरेबल, डे 2 में तो मैं था नहीं, डे 3 में 1 घंटे आया, इट वॉज अ बिट बेटर, एटलीस्ट कुछ तो बोला। डे 4 भी बेटर, 5 भी बेटर। ऐसे करते करते भाई तुम्हारा ऋतिक रोशन बन जाएगा भाई, 6 पैक एब्स बाय द एंड ऑफ द वर्ल्ड चैंपियनशिप। या रिगार्डलेस, द पॉइंट इज, इसके आगे जो वीडियो आएगी ना, वो मेरी आज तक की पहली वीडियो, जो मैंने यूट्यूब पे सबसे पहला कुछ डाला था ना। और चेस से ला मुझे कुछ आता तो है नहीं यार, लड़की पटाना आता है, बट वो स्किल अलग से सिखाऊंगा तुम्हें प्राइवेटली। द पॉइंट इज, इसके आगे जो वीडियो आएगी ना, वो वीडियो है जो मैंने पहली चेस की वीडियो आज तक इंटरनेट पे डाली थी। ये इंग्लिश में है, तो भाई कुछ होंगे हमारे 400 ये लोग कहेंगे, बट योर लैंग्वेज इज नॉट कंसिस्टेंट ऑन द चैनल, यू शुड स्टिक टू हिंदी, यू शुड स्टिक टू इंग्लिश। वो ब्रॉडकास्ट से भी आता है, तो उन लोगों के लिए भाई माफ करना भाई। उस टाइम मुझे पता नहीं था कि भाई मैं 4 साल बाद ये वीडियो बना रहा हूँ। कितने साल हो गए भाई? 2020 अप्रैल 9 कोई वीडियो बनाई थी। और अगर तुम ये वीडियो देखोगे ना, और तुम अब मेरे बात करने का स्टाइल देखोगे भाई, जमीन आसमान का डिफरेंस है भाई। तो मुझे खुद को ऐसा लगता है भाई, पर्सनैलिटी चेंज हो गई भाई यार, मतलब क्रेजी है भाई। तो आई वुड हाईली सजेस्ट भाई, ये वीडियो आप देखें अंत तक और देखें कि भाई, भाई खुद यूट्यूब स्ट्रैटेजी, ठीक है? मैंने 2 प्लेयर्स का नाम उठाया है जिनका भाई नाम भी किसी ने ना सुना हो, ठीक है? पीटर हाइन, नियल्सन, कुछ लोगों ने सुना होगा, बट द पॉइंट इज भाई, यूट्यूब स्ट्रैटेजी, पर्सनैलिटी भाई क्या क्या चेंज हो गया भाई। मतलब देख के ऐसे नॉस्टैल्जिक हो रहा हूँ। मुझे याद है उस टाइम पे पीक कोविड चल रहा था भाई। अरे शिट, मैंने क्या शब्द का नाम ले लिया, अभी वो नीचे वो आ जाएगा उसमें भाई, कि दिस इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटिव। अरे यार क्या टिक्कू यार, क्या सीख यूट्यूब करेगा रे तू। एनीवेज, तो यहां से वीडियो स्टार्ट होगी अगले 5 सेकंड में, अब देखना भाई। एंड ये लाइफ में ना एक मेरे लिए लेसन है, मैं तभी चैनल पे डाल रहा हूँ, मेरे लिए भी, कि भाई लाइफ में इंप्रूव करते चले, एवरीडे 1%, एवरीडे अपने एक एक समोसा खाते चले, कि मतलब अंत में आपको फिर वो एक फैमिली पैक पेट पे दिखे। मतलब यू कैन नॉट गेन 20 kgs इन 1 day, यू हैव टू ईट एवरी सिंगल डे, ओवर ईटिंग एवरी डे, ताकि आपको एंड रिजल्ट साल में दिखे। सो भाई, फॉर इन द स्पिरिट ऑफ इंप्रूवमेंट वीडियो देखो, एंड लाइफ में जो भी टास्क है ना भाई, यू डोंट नीड टू गेट इट राइट नाउ, लॉन्ग टर्म विजन रखें एंड यू विल अचीव इट। Play my first video ever right now. Hi guys, I hope you're all doing well. Today we are going to analyze a game by Alexei Fedorov, who is a grandmaster from Belarus, and his victim today will be Peter Heine Nielsen, whom you all know is the second of world champion Magnus Carlsen. So starting with the first move e4, preferred by the legendary Bobby Fischer, responds with e5, and true to his style, Fedorov replies with 2f4, which is his trademark opening against 1e5. He in fact had a game against Magnus Carlsen himself, where after ef4, uh, he went knight f3, and Carlsen went g5. G5 is kind of a
brute force attempt that is protecting the pawn on f4 and hinting at white that the knight on f3 is kind of misplaced, and maybe at some point he might even go for some kingside attack. Uh, well, Alexei wasn't scared of Magnus, at least not then, and he responded with that h4, g4. Now have a look at this position. Black has only made pawn moves, and he has pushed his g pawn all the way up to g4. And after knight e5, the pawn on g4 will probably be lost. And the layman's eye, it looks as if two complete amateurs are playing. But this is actually well-known theory, and Black is supposed to be doing fine here. And after d6, knight takes g4, uh, knight f6, takes. Now, white is kind of taken his pawn back, but on the other hand, he has this diagonal e1 h4, which is kind of weak, and black also has the g file, which he can use with rook g8 and putting pressure on g2. On the other hand, uh, white's position is solid, apart from the fact that the king on e1 is a bit shaky, and black is not developed enough to take advantage of it. So the game is kind of dynamically balanced, and it actually ended in a draw later. So back to a game. Here, Peter replied with bishop e7, which is also known theory, and white played bishop c4, putting pressure on the pawn on f7, which is usually the weakest point in black structure in e4, e5 openings. White would try to develop with knight e5, knight g5, and put some pressure on f7. And here comes black's idea with bishop h4 check. So what black is aiming for is to force the white king to move and deny him castling rights. But on the other hand, this move is a bit dubious because black is wasting one or two tempi on just forcing the king to move to f1, and uh, that would leave him seriously behind in development. So king f1, and now black responds with d5. Black needs this actually because um, his bishop on h4 is kind of loose and his pieces are not developed. So this kind of gives him a tempo to kind of develop his pieces. And white in its turn takes with the pawn, blocking his own bishop but also opening the e file. And this pawn is not so blocked as you might think, and it will come handy later in the game. So now bishop g4 is played by black, and the main aim is to first of all develop a piece, and also now moves like knight e5 are out of the question because the queen on d1 would be hanging. And more importantly, black would ideally like to develop the knight on g8, and the bishop on h4 in that case would be hanging. So for example, now if I play queen e2 check, black can easily defend with knight e7, and the bishop on h4 is not hanging. So white simply develops and doesn't go for something immediate and just kind of improves his position. Knight e7, knight c3, defending the pawn on d5, knight g6. Now black has protected the pawn on f4 with his knight, and he will try to hold the position in the near future, and he has many long-term positional factors in his favor. For example, the weak square on e3. You can imagine a knight uh, from b8 going to d7, b6, taking on d5 and landing on e3, and it would be very serious for white, the king on f1. So I think somehow uh, white would probably like to gain something in the near future so that he has some serious advantage. Otherwise, black should be better. And after knight g6, now white plays queen e2 check. Now the difference being that the knight is already developed, so knight e7 would actually be a loss of 2 tempi. And if black plays queen e7, then takes on e7, bishop takes, and knight e5. The knight is now not pinned and moves to e5, attacking the bishop on g4, and indirectly also pressuring f7 because uh, a pawn sacrifice like d6 is possible, and this is much better for white.
he has the center, and he will probably round up the pawn on f4. So if queen e7 is not possible, then this is a bit difficult for black, and he has to go back with his bishop. Uh, but that kind of leaves the h4 square, and white immediately goes ahead with h4, proving that the knight on g6 is not well placed. Now, if black allows white to play h5, then he would be slightly worse. The knight will probably have to go to a very awkward square. So Peter immediately kind of defends with h5. And white centralizes his queen with queen e4. The queen is very well placed here because it cannot be easily attacked, and it has some unpleasant pressure in all directions. And now, for example, if black were to castle, which would be the lesser of the evils actually, after knight e5, the position at least optically looks better for white. Black has his own chances with because of the white king on f1, but still, white should be slightly better here. And Peter actually played here knight d7, which is basically a blunder. And I advise you to pause your video and think here what could be white's next move. White went ahead with the pawn sacrifice d6. As I mentioned, the pawn is not so blocked, and it immediately kind of puts pressure on f7. And it has many subtle ideas. For example, black is actually forced to take on d6. There is no other option. Now knight g5. And now you can see the pressure on f7. And believe it or not, black actually resigned here. Why? Well, we'll see for sure. Uh, it's kind of tough to find a move for black here. For example, he would like to castle ideally, but knight on g6 is hanging, and the pawn on f7 is pinned. So that is not an option. The other option that comes to mind would be d5 to kind of block the bishop's diagonal, and knight takes d5 now. So for a moment, this kind of blocks the bishop's diagonal, and it would give a chance for black to castle, let's say. So now what should white play? I kind of advise you to pause your videos again and think what will be the best move for white. Queen takes g6. I'm sure many of you might have found the move. The point being that after f takes g6, knight takes c7, discovered check, king h8 only move, knight g6 is actually made. So seeing this, Peter logically resigned rather than allowing his opponent to mate him over the board. And this was a 13 move lost for a 2650 GM, which you don't get to see every day. With this, we see that King's Gambit is a very sharp setup, where white often tries to attack by sacrificing a pawn, even two sometimes, and black needs to be careful. And objectively, he's fine actually, but he has to kind of hold the position in the opening and hold those position trumps, like the pawn, like the square on e3 here. If black had time, if he could land a knight there, and uh, the king on f1 is very shaky after all, but black never had time to get to the king on f1. So a very double-edged system, but not so bad for white. I would like to thank you all for watching, and personally I love this game because white went for the attack regardless of the awkward position of his own king, and there's something to learn for all of us. See you next time. Stay safe, stay home.